for welcoming everybody for today's session. Beautiful Sunday morning, winter morning. No, it's not a Sunday. It's a working day. Yeah. I think online में Sunday, Monday बराबर सा हो जाता है. Beautiful. Thank you. Resume curriculum vitae CV. Friends, young teachers in the making, is the most important document that you can make for yourself. The most important paper, document that you make for yourself is the resume. It is this paper which reaches the interview room much before you do physically or even virtually. It is this which creates that first impression much talked about ever since. बच्चों एक छोटी सी गुजारिश है, चैट आपके लिए खुला है और अनम्यूट भी कर सकते हैं. जहां जो समझ में ना आए मुझे आगे मत चलने दीजिएगा. कम करेंगे पर ऐसे करेंगे कि बिल्कुल मस्त समझ में आ जाए. ठीक है? सो एंड टीचर्स, वन मोर थिंग, सवाल कभी भी गलत नहीं होते. सो डोंट हेजिटेट. Right? It's the same funda for you when you are the teacher in your classroom. So it's our session, it's not my session. Together we make it or break it, and we will make it wonderful. Okay? So don't hesitate. Wherever you don't understand, just speak up. Jyoti ma'am has been nice enough. I'm sure everybody has an e-copy of the format. Any format, it doesn't matter. Just any format. But yes, ma'am has. Yes. Yeah, Same great. format, ma'am, I have forwarded to them yesterday, and they have prepared their resume, matlab, in whatever manner, but they have some work with them. Sure, ma'am. आपने 99% काम तो करवा ही दिया. Thank you so much. And students, if you do it yourself, then you know it. Learning automatically happens. Yeah. And today in the session, we'll do a little bit of guiding here and there. We'll work on resume, and something more important than the resume, listen carefully. We will learn how to ace the interview, how to lead the interview, how to succeed in the interview basis the resume you create. Okay? So it's not just resume, it is also how to leverage every word that you put on that document. So yes, this paper, this document, your resume, CV, reaches your potential employer and creates that first impression. Now, this first impression actually is very powerful. See, today when you saw me for the first time, all right, virtual mode, but doesn't matter. When each one of you saw me, I'm sure the video was on, without you realizing also, an image is formed in your mind. Young teachers in the making, teachers, student teachers, exactly this happens when you are the teacher and you walk into the class for the first time. एक एनालॉजी की तरह से देखिए, अभी मैं इस प्लेटफॉर्म में इस तरफ हूं, बिल्कुल जल्दी ही आप इस तरफ होंगे और आपके उस तरफ आपसे भी ज्यादा इनोसेंट बच्चे होंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, है ना? उनको शेप अप करना है. आपने क्या सोचा? कुछ भी सोचा the minute you saw me. In other words, the first impression. Like it or not, you created it. Exactly in the same manner, when you enter your class, your children create that impression in their minds. The rest of the time, in the given time today, each one of you is only going to validate. Validate समझते हैं? जब ना समझ में आए, प्लीज बताइएगा, हक से बोलिए. उसको आप प्रूव करेंगे अपने आप के लिए, यार ये फर्स्ट इंप्रेशन सही था या थोड़ा सा गड़बड़ था. That's all. But first impression आपको आगे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंक्लाइन तो करेगा बेटा. ये क्यों बात बोल रही हूं? Exactly this happens with the CV. Exactly this happens
with you as a teacher in your classroom, wherever you are. Exactly this happens in a social gathering. आजकल image consultants का बहुत बोलबाला है. This is exactly what image consultation is. Yeah? कि first impression क्या डल रहा है. Now, coming back to the CV, they say, international statistics, that when a candidate enters the room, even before that person sits on the chair, this first impression has been created. जो कुछ क्लास में बोलूंगी, बहुत हम्बली बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल टिप्स बोलूंगी. इंटरव्यू पैनलिस्ट रही हूँ सालों साल और फ्रीलांस का काम करती हूँ, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम है. आपके ही जो साथ वाला कॉलेज है AIMT, जब वो इस्टेब्लिश हो रहा था, I was there looking into the CVs which were that high for the head of the department, for faculties, and therefore seeding those, उसमें से छांट रहे थे, फिर उनके इंटरव्यूज भी किए थे आप ही के साथ वाले कॉलेज में जब वो फॉर्म हो रहा था. और की तो क्या बात करें, क्यों बात करें. अब ये शेयर इसलिए कर रही हूँ, one, that whatever I say is going to have a practical bent of mind. Two, when this gaddi of CVs reaches the office, pay attention. Even with this practical experience I shared with you, even at such a senior level, fortunately or unfortunately, half of them get filtered and into the bin. Isn't that very sad if that happens to my CV or your CV? आगे के जो chances थे, उसका यार मौका ही नहीं मिला. मौका मिलता, पूरा कोशिश करके करते, फिर न बनता, तो एक बात थी. पर जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है फॉर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इफ माय CV is put aside there, I do not accept that. People, is it right? Come on, people, give me a thumbs up or a smiley. Come on, you have lots of icons on Microsoft. Whatever you can, or use the chat. Any doubts so far? Come on, fill up the form. अभी नींद नहीं आ रही किसी को. Come on, people, more smileys, more thumbs up, more chat inputs. Everybody. कोई भी डाउट है तो बताओ यार. आहा, अब थोड़ा मजा आया ना. And keep this process continued even with your students. It is interaction. Passively सुनेंगे तो switch off हो जाएंगे. ये मेरा सेशन नहीं है. It's the we attitude. Please, teachers, it's the we attitude. It's our session, not yours, not mine. Together, even in your class. Anything I say, I'm trying to associate it with your class environment. Okay? Now, just like the first impression of the candidate, just like the students creating an impression of my beautiful teacher, or my handsome teacher, or you of me, the CV, the paper, creates a huge impact on the people whose job it is to view further. I cannot accept an iota of grammar or spelling lacunas here. Submit बटन दबाने के पहले ग्रामर चेक, स्पेल चेक, और ग्रामर चेक और स्पेल चेक में इग्नोर बटन ना यूज करें. उसको रीचेक करें. हो सकता है कि कंप्यूटर का डिफॉल्ट सेटअप दूसरा हो, COLOUR or COLOR, that's fine, but change that setting to the setting which is acceptable in the organization where you want to go, in the school where this is being followed. Along with the spell check and the grammar check, the presentation of that paper without reading a single word has to be appealing. Words तो बाद में पढ़ेंगे. टीचर मैम, आपने ये किसी बच्चे के कागज को देखते हो और एक इंप्रेशन बना लेते हो उस कागज से, बिना स्पेलिंग्स और एक भी वर्ड पढ़े आपको ये समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ पर है.
शायद टीचर्स की कमी है, and more experience, you'll do this in a more expert manner. So exactly the same way, on this paper, the proper margin, the right font size, the right spacing in between the lines, no unnecessary word. Don't repeat. Don't repeat. समझने वाला अगर acknowledge न भी करे, उस कुर्सी पे जो बैठा है उसको समझ में आता है। न वो ढक्कन है और ना आप ढक्कन है। तो फालतू न फेंकिए, वो कोई लपेटेगा नहीं। है ना पूरी कॉलेज लिंगो? Reason is, you feel that the person is not listening. Let me say it again. Or it is very, very important. Let me put it again on my CV. Not required. Any questions from anybody so far? I think few minutes back, Ajit has raised his hand. I'll just see the chat. Yes, please go ahead. Any questions? I'll see the chat also. Till now, Yes. when we talk about the CV building, and writing, or we can say writing up of CV is that much important that a person's capability and skills could ignore that. Like, ma'am, when we talk about the teaching, it is the implementation of the skill, and building a CV, it's not a part of the main curricula of a teacher, as per I think so. But is that much important? Ajit ji, wonderful question. And I'm sure this is a question which is expressed, which is in the minds of a lot of people. Sir, the answer is a bold, underlined, high font size, yes. Why? Why? In my example of your neighboring college, I did say, honestly, very, very honestly, that this heap of CVs was reduced to half by the mere appearance. The first impression. Today, if you don't like my face for whatever reason, you switch off. You may try for another 5 minutes. You know, they say never judge a book by its cover, and give it a try. But not too much. It's an exceptional case that you will listen to me for 2 hours, despite not liking every minute passed. There is a beautiful model which teachers, I'm deviating a little, but it'll be very worthwhile for you. This is a model. I'll share it in a minute here, but Google it later. इसके बिना classroom चलता नहीं. इसके बिना मेरा session नहीं चलता. इसके बिना आपकी CV भी नहीं बोलती. IDA. The first thing, your CV, I'm relating it to CV, but I repeat, I'm relating it to you as a teacher too. And a little bit of my classroom right now, because this is happening right now for you to understand. IDA stands for attention. It is the job of the CV to get the attention from the interviewer as much as I can. It is my job here to try my level best to get the attention of each one here as much as is possible. There is a bell curve. There'll always be this side and that side of it. Interest, I create an interest so that the interviewer wants more of that candidate, reference the CV. And then a desire. Okay, go on, tell me more. This CV looks interesting. Let me call the person for a GD. Group discussion / interview, whatever is the process. And then final A is action, quickly. Don't let the thing go. Exactly this is what you do in every presentation. Exactly this, my friends, you're going to do in every class. अगर बच्चे की स्टूडेंट की अटेंशन ही नहीं है तो यार कहाँ से वो इंटरेस्ट? आपके ओपनिंग सेंटेंस में मेरे सेंटेंस बोलने से पहले भी अभिलाषा जी ने और विनीत जी ने क्या बोला? यार ये सीवी इंपॉर्टेंट है, सुनो इनडायरेक्टली. Young teachers today, please understand this one sentence I speak. What is in it for me? You sitting on this platform
सुबह सुबह आसान थोड़ी है, सुबह उठ के आपको बोल दिया लॉग इन करो, और यहाँ तो बोला नहीं कि सारे कैमरे ऑन करके रखो, नहीं तो कई कई प्लेटफॉर्म्स हैं वे इंसिस्ट कि कैमरा ऑन हो, तो आप साथ में चाय पीना भी मुश्किल है, खैर वो दिखते हैं कहीं कहीं अलाउ जाता है, बट यू हैव टू बी टोटली अलर्ट एंड अटेंटिव. नाउ the silent question in each one's mind right now is, what's in it for me? Why should I listen? Why should I be there in the session? अरे अटेंडेंस के तो बहुत जरिए हैं, किसी दिन उसकी भी बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं. है ना, ना सुन के भी. तो क्या मतलब है, आपका जो स्टूडेंट है क्लास में, आपका जो ऑडियंस है किसी भी प्रेजेंटेशन पे, किसी भी लेवल पे, उसमें एक ये साइलेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन इट फॉर मी? एग्जैक्टली यही साइलेंट क्वेश्चन मेरे सामने आता है एज अ रिक्रूटर इन एवरी रिज्यूमे. मैं इसको क्यों उठाऊं? देखिए, दोनों पासे से बात कर रही हूं. मैं इस सीवी को क्यों उठाऊं? इसमें मैं क्यों आधा घंटा डालूं जीडी पे? अगर ये बिल्कुल ही एमए है तो pin it. Let me spend that energy and the time and the focus of the organization of the school where you're going to be on something. देखो, एक फनल इफेक्ट होता है. पहले 100 सीवी आई, उसमें से x नंबर हट गई शुरू में, फिर जब 100 से 50 हट गई तो 50 हो गई. 50 को मैंने जीडी के लिए बुलाया. 50 में फनल समझते ना, वो फनल, फनल को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन. सुपर, एब्सोल्युटली सुपर. उसका हिंदी वर्ड नहीं मुझे समझ में आ रहा, जिससे हम लोग वो कई बार घरों में यार वो चीनी वीनी भी भर लेते हैं अगर बॉटल का नॉब छोटा होता है तो. पेट्रोल शटल करने के फनल, पेट्रोल पंप पे फनल, तो वो फनल इफेक्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस में. तो अगर ये सीवी मेरे शुरू में रिजेक्ट हो जाए तो यार बहुत ही गड़बड़ है. इट हैज टू बी गुड. देयरफॉर अजित जी, योर सीवी हैज टू टेक यू टू द नेक्स्ट माइलस्टोन, हैज टू बी such that you put in all possible effort so that no one chance is there कि वो ना हटे. Of course, it is not my job to be writing CVs, but 20-25 साल मेरी जिंदगी के अचीवमेंट्स के, स्ट्रेंथ्स के इस एक कागज में जो झलक में, पल भर में एक बंदा असेस कर लेता है कि इस पे आगे टाइम स्पेंड करूं या ना करूं. आपके बच्चे, स्टूडेंट्स आपकी तरह से नहीं है, एग्जैक्टली जैसे आप हमारी तरह से नहीं है. टेक्नोलॉजी इज डोमिनेटिंग द एंटायर सिनेरियो. I was doing some syllabus with a prestigious university recently, just now. Artificial intelligence is going to dominate the future classrooms. Technology. So जो आपका बच्चा है ना, वो गूगल बचपन से करना जानता है. उसको इंफॉर्मेशन की इतनी इशू नहीं है, उसको बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, उसको जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उस पे ज्यादा चाहिए. हम टीमवर्क की वर्कशॉप्स करते हैं, पहले कभी नहीं करते थे. कम्युनिकेशन स्किल्स एक सब्जेक्ट हो गया है. इट चेंजेस, इट्स डायनेमिक. योर सीवी has to be a document in which every possible effort is made so that you get selected for the next round. Right, Ajit ji? Yeah. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. In the interview, virtual or physical, do not take it lightly. Reference your dress, the correctness of the dress, reference the organization or the school where you're going to be going. If it is an international school, dress up appropriately, even for the online interview. If it is a school like Ek Pathshala in some remote area of a rural setup, dress up accordingly. क्योंकि वो बच्चा जो है उससे आपको कनेक्ट करेगा. अगर वो रैपो न बने, आइडा मॉडल, अगर वो अटेंशन और इंटरेस्ट न बने आपके बोलने में, तो बोलना बेकार है. रैपो बन जाए तो आपके बिन बोले काम हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी. मूविंग फॉरवर्ड, द रिज्यूमे, द सीवी. अच्छा, एक छोटा सा फर्क होता है इस रिज्यूमे और सीवी में, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है. एक में बहुत ब्रीफ है आपके बारे में. बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, ये कल भी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीवी के बारे में बात कर रही थी, मैम 1 पेज में नहीं आ रही, 2 पेज, अरे सब बोलते हैं 1 पेज. ऐसा कोई रूल नहीं है. Yes, as a fresher, 2 pages should be sufficient. 3rd page में जा सकते हैं, but not required really. But what happens today, some of them practical issues, which I get from FAQs, frequently asked questions,
मैम वो एक पेज में फिट कर लेते हैं ना, थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, थोड़ा मार्जिन घटा देते हैं, थोड़ा वो इन बिटवीन जो लाइन स्पेस होती है। अरे अगर रश्मि जी इंटरव्यूअर हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ थोड़ी पढ़ेंगे आपके एक पेज के सीवी को, उसको सीधे के सीधे उठा के डाल देंगे। और बहुत हैं ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। सो आपकी सीवी उस और बहुत ऑप्शंस में फिट होनी चाहिए। यार इसका तो बिना पढ़े ही इतना अपील है। ट्रू, 2 pages CV acceptable. Don't repeat anything, but write your best into it. I'll tell you a simple way of doing it. First, write. Forget about the format. Okay, why I asked Jyoti ji to share a common format between you and me so that we can run through it today for your comfort level. That is all. Otherwise, any format will basically have the same inputs. उसके लिखने का फर्क होगा, inputs वही है। अब देखिए, जब आप बना रहे हैं ना सीवी की, जब तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल योर हॉबीज, राइट। फॉर एग्जाम्पल योर स्ट्रेंथ्स, डजंट मैटर, राइट। When you are putting it into the format, then you sit with the delete key. And because you have written, let me say 10 options, look at my hands, look, you have 10 options. 10 हॉबी के बारे में बता सकता हूँ यार, 10 स्ट्रेंथ्स हैं, 10 अचीवमेंट्स हैं, और सिर्फ 3 लिखने हैं। जब आपके पास 10 होगा तभी तो बेस्ट 3 उठा लोगे। अगर इतनी ही मेहनत करोगे कि 2 से 3 घिस-पिट के लिखा जा रहा है, तो यू आर नॉट गेटिंग द बेस्ट ऑप्शंस, व्हिच इज योर राइट। आपने 20-25 साल इस सीवी के लिए काम किया है, अब ये 2-4 घंटे क्यों कतराते हैं हम? So think of all the achievements. It could be a small achievement, but आपको लगता है स्मॉल है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जब स्टेज पे जाके एक लाइन बोलता है, 2 वर्ड बोलता है, उस एज के लिए, उस फ्रेशर के लिए, उस सिचुएशन के लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो झलक मिलती है आपके सीवी से, ये छोटे-छोटे अचीवमेंट से। The minute you say I've done an event handling thing in school, you know, I was doing nothing else but just ushering people. Oh wow, it's a brilliant thing. Your social skills are amazing. That's the window I get. आप सोचेंगे अरे कुछ भी तो नहीं किया मैंने। एक और एफएक्यू है, मैम वो सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ लिखूं या ना लिखूं? आपकी टोन में सर्टिफिकेट है, सिर्फ सर्टिफिकेट के कागज से सर्टिफिकेट नहीं बनता। If you've actually participated and you know about it, put it there. I repeat, put liberally. किसी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को पॉइंट सोचिए, औरों से पूछिए। जरूरी नहीं है कि आप अग्री करें, but people who know you well, ask their input because that is the perception you create on the other person. True? I think it's a wow class, but you think it's a useless class. So that perception is very important. Feedback, you must have known, I'm sure you know the process of the communication process. So this feedback helps the person to work on it, or to at least understand that this is the way the others perceive, which is very important. Right? You've done a great class. आपके स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया because your vocabulary was very high-fi, because you prepared it from Google and कुछ connect ही नहीं है. No, get down or up to the level of the student. Reference the CV, understand what the recruiter wants from you. Good. Now, look at my hand. Can all of you see my, yeah, there are beautiful wrinkles on it now, but do you see this hand? Okay. There can be multiple fingers like this. Pay attention to me for 2 minutes. This hand represents you. This hand, I'm talking about the mapping process as to how selection will happen. Reference your CV, which will lead you to the PI, which I will talk a little later in this session today. Coming back, this hand represents you. This can have multiple fingers like that, multiple. Each finger here indicates the competency / knowledge area / behavioral expertise, whatever about you.
I repeat, ये जो हाथ है ये आपको represent कर रहा है मेरे बच्चे, मेरी टीचर, मेरा टीचर। इसमें जो हर फिंगर आपको दिख रही है और ऐसे मल्टीपल फिंगर्स होंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ का बोलबाला है। आपकी स्ट्रेंथ कुछ भी सही, गार्डनिंग ही सही, बिल्कुल रिमोट स्ट्रेंथ बता रही हूं, पर आप में वो काबिलियत है। आपकी एबिलिटी, आपका नॉलेज एरिया इंडिकेट कर रहा है। इस हाथ को छोड़ दीजिए, दूसरा हाथ ला रही हूं। ये हाथ छोटा है, दूसरा हाथ, इसमें भी मल्टीपल। This hand is indicating the school or the institution where you want to see yourself. Again, this has multiple fingers. Now, the gaps between the fingers, not the fingers, the gaps between the fingers is the reason for this school or institution to float this job. इस स्कूल को, रश्मि एंड फ्रेंड्स है स्कूल का नाम, वर्ल्ड क्लास स्कूल है। मुझे ऐसी टीचर चाहिए जो इस नीड को फुलफिल कर सके। मेरी नीड, मेरे बच्चों के साथ खेल सके और खेल खेल के लेसन्स ड्रॉ कर सके। मुझे नहीं चाहिए पेन और पेपर वाला क्लासरूम। टेक्नोलॉजी को फ्रेंडली बना सके, बच्चा खुल के कुछ भी पूछ सके, whatever be the need of the institution for this profile. Now what happens? You need to understand the need here. Individually, you may be brilliant with your strengths, but dear teacher, the strengths have to be in sync with the needs. Unless and until you know the needs of the institution where you want to be, how will you leverage this skill ये बहुत है, on your CV, on which will be based the PI and the selection process? This is competency mapping. It's a full HR subject of recruitment. It's a full semester subject of recruitment as to how recruitment happens. You need to know your skill sets. You need to know where you want to go and what are the requirements. This will differ today and tomorrow, especially in the educational sector. It's very dynamic, this environment in which you are growing. The environment from where your students are coming is very dynamic, is very different for the 30 or the 40 children you will have in the class. Each one is coming from a different background, different perception, different experiences, different income bracket, etc., etc. This will change from one school to the other. किसी और स्कूल में मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बोलना सिखा दे, लिखना सिखा दे, कहीं मुझे वैदिक मैथ्स चाहिए, कहीं मुझे गुरुकुल सिस्टम, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, किस चीज में बच्चा इंटरेस्टेड है उस चीज को उठा दो। सिर्फ वही नहीं है जो मैं और आप करते थे क्लासरूम में। Be open-minded and let that open-minded show in this resume. I hope that everybody's understood how the selection process is going to work. I also hope everybody is very, very clear that this CV पे जितना काम करें वो कम है. Any questions basis these two aspects before I move on? Anybody, even from Beneath or Shubham or very humbly any teacher, to give me the direction in which it gives value to our students. Yes, students, any questions so far? If you're not convinced, ask me. Like you have mentioned that we should put everything in the CV and your words, like even if you don't have the certificates, right, ma'am? So Sure. To add to Shubham's interpretation of what I said,
everything into the draft of the CV. Yes, ma'am. And then the pecking order, the priority. Yes. Right? See, some of the teachers here know that I do teach a lot of subjects. In your neighboring college, I've been doing economics and stuff like that. Yeah, other subjects. But here, when I spoke to you, what did I tell you? I only told you that I'm a recruiter. जो चीज इस स्कूल से बनती है वो चीज को उछालिए, दूसरी चीज से मतलब नहीं है. But a job description, reference Priya's input, it's not like a job description. Job description will come from the institution side. You should understand that, the need of the profile. And how will we know? Very beautiful question, Kalika, on the chat. I refer to for everybody's benefit. How will we know the needs of the institution before we join the institution? जरूरी है थोड़ा गूगल इस डायरेक्शन में डालिए ना, सब कुछ मिलेगा. आप ये भी डालिए कि 20 साल बाद क्लासरूम टीचिंग कैसी होगी. एक से एक वीडियोस हैं यार, बहुत फर्क होगी. चाइल्ड सेंट्रिक तो हम कहते हैं आज भी, बट कैसे चाइल्ड और टेक्नोलॉजी का रिश्ता बना है. इट अमेज्ड मी ऑल्सो व्हेन आई सॉ दीज वीडियोस. आई सॉ दिस रेफरेंस ऑफ सिलेबस व्हेन आई वाज टीचिंग. Yeah, so it just got into my environment, so I learned. But Google the type of institution where you want to go. Is it global? Is it international? Is it rural? सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है. पर जहां भी जाओ ढब थोड़ा फर्क होगा. जहां मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, जहां लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं वहां पढ़ाने जाऊं तो ये एग्जाम्पल्स फिट नहीं होंगे. मुझे AI के बच्चों का बैकग्राउंड पता है, इसलिए मैं ये बातें बता रही हूँ कि आपका टेक्नोलॉजी और आपका फर्दर ज्यादा अच्छे सिटीज में है. अच्छे या बुरे की बात नहीं है, अर्बन में ज्यादा है, बेटर पर कैपिटा इनकम वाले जगहों में ज्यादा है. राइट? सो फाइंड आउट व्हाट is the category of the institution where you want to go. Benita, you're doing something else. Find out. You're reading some WhatsApp messages. Pay attention to me. I'm writing some points in my notes. Sure. Non-verbal communicates a lot in the PI. Recruiter at heart. Okay. That was on a friendly note, nothing personal there. So find out what is the teaching pedagogy. Find out from the alumni. Just talk to the children in the playground. यार क्लास में आज क्या अच्छा लगा. दो चीजें होती हैं. आप मेरी क्लास के बाद भी इवेल्युएट करना, अपने आपस में करोगे थोड़ी गपशप. यार क्या था? दो चीजें, कंटेंट और इस कंटेंट की डिलीवरी. बस आपकी क्लास में जब आप टीचर, मैं आपकी स्टूडेंट, दो चीज पे अनजाने में सबकॉन्शियसली इवेल्युएट करूंगी. शायद इसको एक्सप्रेस ना कर पाऊं, एक मासूम बच्चा भी. कंटेंट क्या था और उसकी डिलीवरी कैसी थी. डिलीवरी बहुत हैवी थी तो स्विच ऑफ हो जाएगा बच्चा. वो आइडा इंटरेस्ट रखना है, डिजायर टू नो मोर, वैल्यू एड. इज इट वैल्यूएबल टू मी? डज इट कनेक्ट? Then that interest will be sustained. So these are ways of knowing about the institution, and it is a must thing. Otherwise, how will you think of this competency mapping? Today, I was told that this is my session. Therefore, I knew the need. Therefore, with my competency, I spoke about that competency which fits in for the need, so that my audience believes that yes, there is a background with this teacher, and probably she's going to share something which is of value. If I had said, hey, gardening is my hobby, I know nothing about interview, क्या बात होती भाई? वो फोरम अलग है ना. Now moving forward, if you have your CV available, no issues if you don't have it. If you have it available either on your phone as a soft or whatever, and ma'am says you have a print and you worked on it, even if you have it online, doesn't matter if it is on the phone, mobile, or you have a physical, no issues. I'll run you through it. Photo. A professional looking photo, please. Not your most beautiful photo,
It doesn't matter. But a photo in which I, as a parent or a grandparent, feel this person is okay to be spending time with my child. The child feels, I want to listen to him or her. Not a fashionable social butterfly. It's a profession, whatever be your age. And in this profession, it is simplicity and high thinking which are the rewarding words. We build characters. We don't play around. We build this resource, human capital, which in turn manages all other resources. The most precious of all resources. Put a professional looking picture. That'll be the first impression. Without reading a single word, your prospective client, I'm saying the recruiter, is going to make an image about you. बच्चों का और पेरेंट का और ग्रैंड पेरेंट का तो मैंने एग्जाम्पल शेयर करा, पहले रिक्रूट तो हो. वही अमित वाला क्वेश्चन, पहले सिलेक्शन में अगला राउंड तो आए, सीवी की ये पर्पस है, का ये पर्पस है. आगे चले, ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ टीचिंग वो प्रोफेशन नहीं है, इनफैक्ट कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप मुझे एक पे चेक दें और मैं आपको 8-10 घंटे या 2-4 घंटे दे दूं. कोई भी ऐसा प्रोफेशन बनता नहीं. टीचिंग तो बिल्कुल नहीं बनता. When you teach, you give a part of yourself. When you teach, you learn the maximum. You learn the perception of your audience and you learn how to relate to that. Otherwise, you don't qualify for that fit. What is in it for me? Unless and until you give value to what is the need, you are not needed. And teachers, it becomes more and more challenging because change ho raha hai bahut. Please look up the ways in which classroom teaching is going to change. Look at TED Talks. TED Talks. I'm sure everybody is familiar with them. Are you people familiar with this? Must know. TED Talks. People, if you're familiar, give me a smiley or a thumbs up. Come on, I want something. TED Talk किसने किसी भी चीज पे देखी है? अरे इतने से नहीं चलेगा, और भी जरूर देखी होगी. चैट पे तो मैं देख रही हूँ. चैट बेटा, ये जो इधर से उधर फॉरवर्ड डालते हो ना फ्री टाइम पे, जरा ये टेड टॉक गूगल कर दीजिएगा. यूट्यूब पे जाके टेड टॉक ऑन एनीथिंग दैट यू वांट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. They are just 8 to 10 videos about real people you know. For example, किरण बेदी. अरे कितनी परेशानियों से उठ के उसने ये सब करा है, ये नहीं मालूम. महेश्वरी, सब उसकी वाहवाही करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है. उसकी जिंदगी में क्या उछल कूद आई है. मिस वर्ल्ड कौन बनी है भाई अभी रिसेंटली, जरा बताइए जल्दी से. मिस वर्ल्ड अरे जल्दी बोलिए, ये तो बच्चों वाली बात है. और बोलिए, सब बोलिए. हरनाज कौर सिंधु. ब्यूटीफुल. क्या ये भी पता था कि उसने मिस यूनिवर्स के ऑनलाइन इंटरव्यूज धारावाही के स्लम में एक चौल से बैठ के दिए हैं? कौन कहता है कि आप कर नहीं सकते? सब कुछ कर सकते हो बेटा, बहुत एनर्जी है. ठीक है, ये ना बोलो कि मैम टाइम नहीं है टेड टॉक देखने का. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आने वाले एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर करेंगे. You will anticipate the change in the ways of successful teaching and linking with students. Great. So this is beautiful. You can write TED Talks YouTube पे जाके free of cost, very interesting with a video there. 8-10 मिनट का है, इसलिए मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं. ये रियल होते हैं. आपको TED Talk चाहिए on CV making, on what is the point of making a good CV. Why should I put my time on it? My role is to teach. But to reach that role, there is a path which I have to tread. Sure.
moving forward, I see the time also. Teaching subjects, that's a clear one. Yes, yes, the Josh, exactly, Ankita. इंग्लिश में धीरे धीरे ये एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन वाली चीजों को टाइम दीजिए. इंग्लिश समझना और बोलना सेकंड नेचर हो जाएगा. इंग्लिश आ जाए फिर आप भोजपुरी में भी बोलिए, पर इंग्लिश इज द विंडो टू ग्लोबल वर्ल्ड, टू ग्लोबल टीचिंग, टू ग्लोबल work. It will add to your confidence. So whatever extras, at least, this is fun. Try and do a TED Talk 10 minutes every day before sleeping. You will get a lot of extra information. See, today, for example, nothing personal about me, but very humbly I share, कहने को CV मेकिंग क्लास है. सिर्फ CV के बारे में ही बोल सकती थी 2 घंटे क्या 20 घंटे, पर नहीं, वो उसमें रिलेटेड वैल्यू एड चीजें डाल के आपका कंटेंट रिच हो जाएगा, पर रिलेटेड और वैल्यू एड. और बीच में लगे कि अगर बच्चे थक गए हैं तो हाँ, एक जोक भी हो सकती है. You get it? That is what you have to do. And that is what all this extra exposure away from your textbooks is going to do for you as an individual. Your personality is what you share with your students. Knowledge तो यार, it's a key away. आप मुझसे अच्छा CV के ऊपर निकाल लेंगे इंफॉर्मेशन. आपको नहीं चाहिए कि CV एक क्रोनोलॉजिकल भी फॉर्मेट होता है, एक फंक्शनल भी होता है, क्रॉस फंक्शनल भी होता है. वो थ्योरी नहीं चाहिए यार. Moving forward, personal attributes. अब ये personal attributes वगैरह जो है, इस Ma'am, one question is there. Sure, ma'am. Actually, ma'am, in the objective part, most of the time students they are copying from the net. So what they can write, matlab, as they are freshers. So what are the suitable objectives for them? Jyoti ji, Means career objectives. Sure, beautiful question. Beautiful question. Indeed, I understand, because even when you're doing SOPs or statement of purpose, that's SOP, एक से एक मस्त मिलती है गूगल पे. और आजकल कोई असाइनमेंट टीचर देती नहीं है कि पहले गूगलिंग हो जाती है ना. देखिए, ऑब्जेक्टिव मैंने थोड़ी देर पहले इस पे टच किया था हल्का सा, फिर मैंने छोड़ दिया था, पर अब ज्योति मैम से ये क्वेश्चन आया है तो इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे. मैंने ये कहा था कि कोई भी प्रोफेशन में मेरे घंटों की और आपके चेक का ट्रांजैक्शन ही नहीं है. यस, दैट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, बट सिर्फ वो नहीं है. I will come to the objectives. Listen to my one sentence again. Each of us, each of you, teacher, is going to be paid as per the value you bring to the hour, not only the hours you bring to the organization or the school. It is the value which you bring to the classroom or the virtual class or a class in the garden. It's not necessarily a classroom. The objective has to be in sync. For example, your teacher today and your learner, Rashmi, I'm not doing this session only for the paycheck which Abhilasha ji is going to sign for me. There is so much more. Of course, that is an important parameter. Whether it's Rashmi or whether it's Ankita or Priya, it's an important parameter, but not the only parameter. If we make it the only parameter, we don't really put too much value in the hours. Coming to the objective, you have to have your passion and your personal interest in this profession. Otherwise, तो काम पूरा हो रहा है. अगर मेरा बच्चा सिर्फ अटेंडेंस के लिए मेरे सेशन में बैठा है
तो मेरे को सेशन नहीं लेना चाहिए। नहीं, अगर मैं बच्चे का डिजायर और इंटरेस्ट और उसमें वैल्यू नहीं दे सकती, तो मैं क्वालिफाइड तो हूं एमएड और पीएचडी से, पर बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूं इस पोजीशन के लिए। So your objective must have some bit of your interest and your passion in this profession. You have to have the interest to interact and play with children, because that's when you learn about them and then you can teach accordingly. You must be interested and have a passion for the teaching part of it. Only for a page, any profession, beta, any profession. Otherwise, you cannot give it your best. You have to give your best to every profession, every hour of that profession. Whether it is छोला भटूरा बनाना, 10 दुकानें हैं, एक की कैसी चलती है, बाकी 9 पे क्यों नहीं आते, उस 10 वाली पे क्यों लाइन लगी है? कुछ तो होगा, वो कुछ तो होगा जरूरी है. That intangible interest and passion is what will make you work for it. Read up extra. Listen to stories which motivate your students. It's not just teaching a subject. It's not just, I come to the class and I teach photosynthesis. Oh no. Let them do the work of photosynthesis. I get them to get the seeds and the cotton and grow it. You put life into your classroom that way. Only if you do that little extra to make it extraordinary. A class, a session. You have to do that little extra than the ordinary to make it extraordinary. Yeah? So the objective, don't just copy paste. Link it with your inner passion. And of course, I want to make a difference today with my 2-hour session. Even if it was a half-an-hour session, I want to make a difference in as many as possible lives with my short session. कि यार ये सीवी इंपॉर्टेंट है, इस पे तू टाइम डाल, इस पे तू एफर्ट डाल, इस पे डाल 10 घंटे गूगल कर, पर अपनी बना फिर. Because you are unique. Google will have samples. Rashmi ji will talk about 100 formats. The management will give you n number of things, but it is you. It is your CV. And this paper has to be backed by you in the room, in the personal interview process. It is about you. Yeah, so the objective, fine, there is a format, there is a respectful language, etc., but put it with you. अब बोलोगे मैम क्या लिख दें यार, कुछ भी नहीं है, वो नौकरी चाहिए, एक मिल गई. अरे उससे थोड़ा ज्यादा होगा भाई. और देखिए, अगर चॉइस है तो वो करना चाहिए जो आपका मन करे, और अगर चॉइस नहीं है तो जो भी करो उसमें मन लगना चाहिए. इस जंक्चर पे आके आपने टीचिंग प्रोफेशन चूज किया या उसमें आ गए, अब वो मेरा लाइफ है, क्योंकि इसमें अंडू बटन या रिवर्ट करना बहुत एक्सपेंसिव है. एक मैं थोड़ा सा डिविएट कर रही हूँ, पर बच्चों को एक बात बताती हूँ जिससे बिल्कुल ये बात याद हो जाएगी जो अभी कह रही हूँ, पैशन वाली बात. एक प्यारी सी लड़की एक मंदिर में पूजा कर रही थी. प्यारी सी लड़की, बड़ी सी लड़की, शादी यार मेरी शादी काश उससे हो जाए. ध्यान से सुनिएगा बेटा, उससे हो जाए जिससे मैं चाहती हूँ. मेरी शादी काश उससे हो जाए जिससे मैं चाहती हूँ. एक और लड़की एक और मंदिर में पास में ही पूजा कर रही थी. सेम एज, सेम स्टफ. लिसन केयरफुली. शी वाज सेइंग, भगवान, माय ओनली प्रेयर इज दैट आई लव द मैन आई मैरी. ये बीच में मैरिज का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि मेरे को पता है मेरी एज ग्रुप मेरे बच्चों की ऐसी है कि इसमें इंटरेस्ट आएगा बाद में, इसलिए सुनेंगे. अब ये मैरिज को हटा के वर्क डाल दीजिए. काश मुझे वो काम मिल जाए जिसको करने में मेरा मन लगता है. नहीं तो भगवान इतनी तो कृपा कर कि जो भी काम करूं उसमें मेरा मन लगने लगे. अगर टीचिंग में आपका मन नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, किसी चीज में भी नहीं होगा. रोटी भी पकानी है ना,
यार मन होगा तो ठीक है, नहीं तो आधी जल जाएंगी, आधी कच्ची बन जाएंगी। मन होगा तो आप 24 घंटे कर सकते हैं, मन नहीं है तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब सेशन खत्म हो। मन लगाना पड़ेगा जो भी काम है। कभी कभी इट विल नॉट वर्क आउट, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। Yeah, so the objective and all this little 10 minutes gupshup should have a link. Moving forward, the personal attributes. This is where your strengths, etc., write as much as you can think of, and then prioritize, removing the lower priority ones with the delete key. But think of options. See, unless and until you have the offer from 5 colleges, from 5 institutions to join them, how will you choose कि मुझे यहाँ जाना है? So options पहले ढेर से बनाइए ताकि choice आपकी rich हो. Educational qualifications. कहीं मार्क्स कम है तो वो एरिया ऑफ क्वेश्चनिंग है, कहीं ज्यादा है तो मैं ये कंपेयर करूंगी जब काबिलियत आपकी 80% लाने की है तो यहाँ 60% क्यों। और इंटरव्यू में कोई भी सवाल कहीं पर भी आपको आ सकता है। रिलैक्स, जो है वो है, अंडू नहीं कर सकती मैं, सिर्फ जो है इस कागज पे उसकी तैयारी करके जा सकती हूँ। सो नाउ इंट्रोस्पेक्ट, reference a gap in your education profile in that column part of it, or the low marks anywhere, as to why was it so. You know, my marks in class 12 are low in comparison to the other academic achievements because at that time there was a financial need in my house and I was taking tuitions. So my own studies had to take a hit. Perfectly fine. My marks in this year are a little low because, you know, there was a commitment in the family. I had to go to the agricultural farm and help my elders in the sowing of the seed or the cutting of the crop. Or somebody was sick and I had to take care. I had to do the cooking because Ma was working. Everything's fine. As long as you are not lazing around and wasting your time. So prepare your questions accordingly. The gaps. उस वक्त कुछ भी बोल देंगे तो वो अटपटा जाएगी बात। सीवी का काम लिखने के बाद एक्चुअली शुरू होता है। हम सोचते हैं सीवी बन गई, सबमिट कर दी, खत्म। नहीं। एक माइलस्टोन पे रीच करते हैं तो अगला माइलस्टोन आता है। सीवी की तैयारी करनी है, सीवी को जानना है, उस पे क्या सवाल उठेगा वो पहले से सोच के जाना है। वो जो सवाल उठेगा उसका मैं क्या जवाब दूंगी, अगर ये जवाब दिया तो अगला सवाल क्या आएगा, अगर ये जवाब दिया तो अगला सवाल क्या आएगा। It's pure baby. Yeah, give me 10 minutes more. I'll run you through the CV and then I will tell you exactly what I've just discussed. How to prepare the questions and the answers, reference your CV. The course in your format says 10th first and then 12th later and so on. Perfectly fine. This is the ascending format. You can also have the descending format in which what you are doing presently comes up first and then that order. What you did next and the 10th is the last. Nothing wrong or right with either. Both are fine, acceptable. Personally, with my experience and the experience of a lot of my colleagues, I would say I prefer the descending. I want to know what you're doing now first, because that is more important, especially as a fresher. And if you have any job X, please create that column. हजारों फॉर्मेट्स देख लीजिए, 50 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, पर अल्टीमेटली कॉलेज भी कई बार इंसिस्ट करेगा कि इस फॉर्मेट में डालिए। ठीक है, जब कॉलेज के थ्रू सीवी भेज रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू अबाइड बाय द कॉलेज फॉर्मेट। नाउ पे अटेंशन,
Ultimately, create your own format. If you have work X, create a line for that, insert that. If you don't have work X and you have a format in which work X is there, delete that. Don't write NA, not applicable. If you have a lot of miscellaneous certificates, create that column. It has to be created to suit your input. That is why I repeat, I said, जो आपके अच्छाइयाँ हैं, जो भी बताना चाहते हो रिक्रूटर को, फिर वो एक स्क्रिबल करके लिख लो कहीं कागज पे. बाद में उसमें से कट कर देंगे, डाल देंगे, पर लिख तो लो पहले. पूछ तो लो जो लोगों से जो आपको अच्छे से जानते. School experience, achievements, achievement participation, academics, non-academics. अगर स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है तो क्रिएट स्पोर्ट्स. अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत कुछ है तो क्रिएट दैट. एक बच्चा था, शायद आप ही के एआई का ही था यार, नेशनल लेवल पे खेल रखा था और लिखा नहीं सीवी पे. अरे मेरे को इंटरव्यूअर में कहां से समझ में आएगी बात. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेला है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपकी उम्र में. It shows the capability of you managing yourself in unknown environments. You accept failure. You work in a team. You are creative. You are energetic. You are participating. कितनी बातें आपके बारे में पता चल जाती हैं अगर आप ये सब कर रहे हो. देखिए, एज ए रिक्रूटर मैं ये भी देखती हूँ कि यार ये सारा इंडिविजुअल है अचीवमेंट या टीम वर्क के साथ भी कुछ है. मुझे स्कूल बोलता है कि मैडम ऐसा कैंडिडेट रिक्रूट करिए जो कुछ टीम वर्क में भी कर सकता है, क्योंकि अकेले तो आप इंडिविजुअली बहुत ब्रिलियंट हैं, पर आपको काम टीम के साथ करना पड़ेगा. तो अगर कोई ऐसा अचीवमेंट है बेटा जो थोड़ा लोअर लेवल का भी है, पर जो आपके बारे में एक अलग एस्पेक्ट देता है आपके बारे में, आपके रोल के बारे में, उसको जरूर लिखिए. पर्सनल डिटेल्स, हॉबीज. मुझे पता है बच्चे वो हॉबीज लिखना चाहते हैं कई बार, यार इस पे क्या पूछ लेगा. हाँ, लिख देता हूँ कुकिंग, इस पे कौन क्या पूछेगा. होता है ऐसे. क्या हॉबीज लिखी है बच्चों, लिखो जरा चैट में, क्या हॉबीज आई है, स्पेशली जो हटके हॉबी है, जरा लिखो ना. Yes, students, please write your remarks in the chat box. फटाफट, एक दो हॉबी, सारी मत लिखिए. मूवीज, वाओ, लिखिए जल्दी से लिखिए. आपका अगला क्वेश्चन आपसे, आपके इनपुट से क्रिएट करूंगी. हाँ, सेल्फ कंपोजिंग पोएम, स्केचिंग, बास्केटबॉल, क्या बात है, ट्रैवलिंग, स्टोरी टेलिंग, अजीत, ब्यूटीफुल, स्पीचेस, कुकिंग, sure. If I ask you about debate, painting, sketching, cooking, whatever, gardening, अंकिता, लास्ट इनपुट गार्डनिंग. यार ये रोज के प्लांट को कैसे उगाऊं, कैसे उगाते हैं? Yes, ma'am. Ma'am, कैसे उगाते you हैं? just इसके बीज yes, कहाँ से ma'am. लाऊं? Ma'am, there is no need to take out the seeds. You can take the stamp of the the rose plants from your neighbor, and you just Thank put you. it there. Thank you. Thank you. If she was fudging this, if she was bluffing it, she would not know this. रोज के प्लांट के सीड और बल्ब से नहीं, बल्कि कटिंग से उसकी ग्रोथ होती है. चेक करने के 1000 तरीके हैं किसी भी चीज को. अगर मुझे इंटरव्यू पैनलिस्ट को, ध्यान दीजिए, जवाब नहीं मालूम है, कोई परेशानी नहीं है. The tone in which you will answer will tell me whether it's right or wrong. So do not bluff your way. When you say this is your hobby or your interest, it means that you are spending time on it. It means you know something about it. Know about your hobbies. For a fresher, इस पे गपशप होगी ही होगी. जो चीज आप सीवी पे लिख के देंगे मुझे, that is like a परोसी हुई थाली, उसमें तो यार पूछा ही जाएगा. So work on it, prepare on it. Great. Declaration, place, yeah. A CV must be signed on the date when you give it. Otherwise, it's just a paper.
without your signature. Friends, any questions or anything that you want me to expand on or repeat, or also, since it is our session, anything that you want to add on? Go ahead. If anybody wants to add on, please go ahead. Any questions, any doubts, any clarifications, anywhere where you don't agree with whatever we've discussed in the session, please go ahead. Good morning, ma'am. Ma'am, I Sure. have a question. Like, ma'am, there are some students who have dropped means after 12th. So during that meantime, like maybe there is a drop of 3 years, 2 years, or 1 year. So what do they say that what they have done? Means maybe, ma'am, it happens like we have taken admission in some other institute, university, but we were not able to complete our graduation there because we were not able to pass that exam. So what will we say? That you have not done your graduation. No, Ma'am, once again. done. The gap between the years of Gap passing is there. course. Yes, during a gap in the ACADS, right? Yes, ma'am. Yes, She want ma'am. to Yes, say ma'am. that Yeah. she had a gap between her education. So how Sure. she will justify that? Good, great. Who was this? I couldn't make out. I was trying to go from who's speaking, but your name, please. Yes, Pushpa Kumari, ma'am. ma'am. Pushpa, ma'am. Pushpa, ma'am. Brilliant, Pushpa ji. Pushpa, ma'am. You tell me, if this was an interview right now, and if I say, hey, there's a gap here, what would you answer? It is exactly the analogy of low marks or high marks. Exactly that. Yes, anybody can answer. Yes, anybody. Just whatever your answer. Whatever it be, it doesn't have to be Ma'am, the right I answer. will answer like I have taken admission in other university, but I was not able to pass the exam of that university, and that was I didn't make it. All right, great. Thank you so much. So whatever you are doing during the gap is something you have to prepare at. At that time, I was preparing for other competitive exams. And even if you don't make it there, it's fine. During that time, I realized that teaching was my passion. So I got onto this, and this gap was there. Or my financial conditions at home required me to work for a year, so the gap. My health was an issue. Somebody else needed to be taken care of. आप उस वक्त जो भी कर रहे थे ना, उसको बिल्डअप कर लीजिए और उसको पॉजिटिवली बिल्डअप कर दीजिए. उसमें से ये मत बोलिए कि फेलियर था. अगर फेलियर भी हुआ तो उससे क्या लर्निंग हुई अल्टीमेटली. फेलियर पर से इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर हर फेलियर से मुझे लर्निंग चाहिए. वीकनेस पर से इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप बोले कि कोई फेलियर नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, तो गड़बड़ है. तो अगर गैप हुआ, आप सोचिए कि उस गैप की वजह क्या थी. फ्रेशर्स में अक्सर होता है कि किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आर्मी बैकग्राउंड में, या यहाँ से वहाँ पोस्टिंग हो गई है. तो ये पोस्टिंग ट्रांसफर वाली बात भी अगर आर्मी स्कूल है तो उसकी समझ में आएगा. दूसरे स्कूल को जल्दी नहीं पकड़ में आएगा क्योंकि उसको बेस क्लियर नहीं है. दे डोंट अंडरस्टैंड. दे जनरली थिंक कि नर्सरी से और 12th तक तो एक ही स्कूल से चलता है. हम समझते हैं, आई एम ऑल्सो फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, कि भाई यार वो ट्रांसफर हो गया मिडिल क्लास में तो कहीं कहीं गैप हो ही जाता है. कहीं मराठी बच्चा पढ़ रहा है तो कहीं फ्रेंच पढ़ रहा है तो कोई, अरे गैप तो होगा ही होगा. राइट. सो प्रिपेयर ऑन दैट and answer in a manner that your audience understands. So elaborate that. See, I'm from an army background and we have transfers. So sometimes, you have to repeat a year, isn't it? Sometimes admission cycle is different in a different geographical region. Or I'm preparing for something else. That's fine. But whatever you are doing, the failure has to end with some learning. आपके मेरिट पे मैं आपको रिक्रूट करूंगी मेरे स्कूल में, आपकी वीकनेस और आपके फेलियर के बेसिस पे नहीं. सुन लूंगी मैं, क्योंकि
As an interviewer, I'm a very patient listener. That is my job. Why? So that the actual you opens up in front of me. As a teacher, you have to inculcate the habit of very patient listening skills so that your student is able to share with you when he or she is uncomfortable, either because of the home issues or because of other environmental issues. एक बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा बच्चे के साथ. उसके लिए हर वक्त बोलना नहीं है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले. सुनना ज्यादा जरूरी है. 2 कान है, 1 मुंह है. Yeah, do I answer that, Pushpa ma'am? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Vaise, much. ma'am, this is not a problem with me, but still I wanted to know the answer. No. I understand. It is not a problem with us, but we are creating these problems on us as an example for everybody's understanding. You know, example is the best way to clarify anything or to teach. You be punctual, the others will be punctual in the class. You yourself come late or are lazy or are not tidy. How can you expect the class students to be tidy and punctual, etc.? Example is the surest way of teaching. सबसे पुराना तरीका भी है. Now moving forward. One more related question is this, ma'am. Most of the time students are asking that, ma'am, if I have less marks during my academics in 10th or 12th or graduation, so should I, it is mandatory to mention the marks on CV. So what is your answer, ma'am, on it? A very simple yes, Jyoti ji. A very simple yes. Yes. There is no doubt on it. And even till the second decimal place. I understand this. I understand this problem. I also know our background of my students here. पर जहां आपने नहीं लिखे, आप सर्च लीजिए कि उस पे तो पक्का ग्रिल होना है. और लाइफ में ना अंडू बटन नहीं है. आपके सिस्टम में है, आपके लैपटॉप पे है अंडू बटन, लाइफ में नहीं है. तो जो भी किया उसको सोच विचार करके कि इस पे अगर क्वेश्चन आंसर हुआ, जो कि होगा, मैं क्या करूं. मेरे 60% भी नहीं है यार. 10th में मेरे 50% है. तो क्या हुआ? क्यों? Because I have no undo button. I can't change it. That time I was playing with my friends. Maybe I was in some sports. Or maybe I was just playing, you know, जिसका सर्टिफिकेशन भी नहीं है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, वो गेम्स में मेरा टाइम जा रहा था. Because I did not realize the importance of education. It's okay. But in the interview, if I suddenly ask you कि यार इसमें मार्क्स कम क्यों है, यार क्या करा था तू, फिर आप घर आ जाओगे और कुछ भी बोल दोगे. वो नहीं होना चाहिए. CV पे क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करनी जरूरी है. जितना जरूरी CV पे मेहनत करना है, उतना ही जरूरी, इफ नॉट मोर, उस पे तैयारी करना है. देखो बेटा, आपने 20-22 साल तो मेहनत कर ली ना. कहाँ हम हाथ पकड़ के ABCD लिखना सीखे थे. अब आप मस्त बढ़िया से सेशंस ले रहे हो स्कूल्स में. अब क्या है ना, इस स्टूडेंट से टेबल के उस तरफ जाना है, टीचर बनना है. 20-22 साल इतनी मेहनत कर ली इस स्टूडेंट प्रोफाइल पे अपने ऊपर. अब थोड़ी और हाथी निकल गया, पूंछ बची है. इस लर्निंग को पॉलिश कर लीजिए ताकि उसकी मार्केट आप कर सकें. देखिए, ये 2 रुपए की पेंसिल है, ठीक है. अगर आप इसको बेच रहे हैं प्रगति मैदान के चांदनी चौक के फुटपाथ बाजार पे, परफेक्ट मतलब है, 50 लोग, 1000 लोग बेच रहे हैं 2 रुपए की पेंसिल. मुझे ये पेंसिल बेचनी है, जरूरी है ये 2 रुपए. 100 बिक गई है, एक और चाहिए मुझे 2 रुपए का रेवेन्यू. मैं क्या करूंगी? मैं इसको बेचने के लिए इसकी हर पॉजिटिव चीज को जानूंगी. हाँ या ना? यार पकड़ के तो देखो कितने कलर है, क्या ग्रिप है यार. I will talk about the goodness of this 2 रुपया की चीज infinitely with so much of passion. ये पेंसिल की सेल मेरे वर्ल्ड ट्रिप को साकार करती है. In other words, make the stakes high. ये बिकनी है, नहीं तो नहीं होगा. पूरा इंटरेस्ट, पूरी जी जान से ये 2 रुपए की पेंसिल बेचनी है. 2 की हो या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, पर पूरा मेरा जान जानिए, उसमें कोशिश जानिए. अब ये देखो,
ये 2 रुपए की पेंसिल जब आप पटरी बाजार पे बेच रहे थे, what didn't you do to convert this call? When you are selling yourself through your CV, कैसे कंजूसी कर सकते हैं एफर्ट की? ये तो आपकी बात है, मेरी बात है। To know your strengths, your positives is your business. ये जानने की चीज के पीछे जी जान लगा देते हैं। एक नौकरी अभी देती हूँ मैं आपको, क्या ये पेंसिलें बेचनी है या ये मोबाइल बेचना है, कोई भी प्रोडक्ट सही, आप जी जान से उसकी ट्रेनिंग करते हो। ये सुनो, अपने पे आके कहां से ये कमी आ गई? You have to market yourself with infinite more times passion than we market this. CV is the first step. CV will keep changing. आज बना के मत रह जाइए। आप 4 लेसन्स और कहीं पढ़ा के आते हैं, आपका परसेप्शन और कितना बढ़ जाता है, उसमें लिखिए बच्चे, अपडेट करते जाइए। Okay, now, ma'am, Jyoti ji, have I answered any pending question? Should I just move on? Ma'am, Shubham has raised his hand. Yes, Shubham. Sure. Ma'am, despite of having skills and participating in lots of events and having those things which are needed for that particular job profile, but I'm having a less marks in my academics. Suppose in my graduation in 12th, I have less marks, and in B.Ed, I am having a very good score, like 80 plus. How much this affects my chance of getting that particular job, despite having all other skills which are needed for that profile? बिल गेट्स का नाम सुना? Yes, ma'am. आपकी हंसी से मुझे समझ में आ गया कि आप उसके आगे भी जानते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट। Yes, ma'am. किशोर बयानी का नाम सुना? बिग बाजार तो गए होंगे? Yes, ma'am. किशोर बयानी, फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार का मालिक। Yes, ma'am. Calls himself the ugly duckling of his family. जहां फिल्म बनाई फ्लॉप हो गया, ये करा वो फ्लॉप हो गया, डर गया यार बिग बाजार कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, और वहां स्टैम्पीड हो गई। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं। डिबेट नहीं करना चाहती क्लास में, किसी दिन मैम इस पे दीजिए मोटिवेशन क्लास पे, मैं हजारों स्टोरीज ऐसी बताऊंगी इनको। जो है बेटा उसको अंडू नहीं कर सकते। क्यों कम है ये जानना जरूरी है। इवन इफ इट इज, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, माहौल नहीं था, इट्स ओके। एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल इनपुट दैट बाद में बढ़ गई इस एरिया में, क्योंकि इसमें मेरा पैशन चला गया, राइट? सो बैक इट अप फेवरेबली फॉर यू। रिक्रूटमेंट जो है उस पे होगा, जो नहीं है उसका न बयान करिए। फेलियर न बताइए मुझे, वीकनेस न बताइए मुझे इंटरव्यू में या सीवी पर, जब तक मैं आपको फोर्स करती हूं कि मेरे सीवी के फॉर्मेट में दीजिए अपना डेटा, और मेरे सीवी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है वीकनेस और फेलियर। Yes, ma'am. या पीआई में मैं जिक्र करूं, टेल मी अबाउट योर फेलियर्स, इवन देन बी ब्रीफ। there's a closed-ended approach of answering, closed questions, closed conversations, open-ended questions. ज्यादा न बोलिए, कम से कम बोलिए। जब फेलियर और वीकनेस के बारे में बात होगी, ज्यादा से ज्यादा उछालिए अपने आप को, देन आपकी स्ट्रेंथ्स के और अचीवमेंट्स की बात हो, पर बुनियाद हो सच्चाई पे, क्योंकि चेक करना मेरा काम है। सिर्फ आपके बोलने से नहीं ले लूंगी, उसको मैं चेक करना करूंगी। So prepare on the strengths, but be aware about the weaknesses and the failures, so that the conversation unknowingly doesn't go into that area. Sure? Good? Thank you. Right. Now, give me 10 minutes of good concentration and focus time. After that, we'll have a more Q&A or a question or a revision or whatever we've done. But 10 minutes of a new technique, of an amazing technique of acing the interview. Reference your CV. Jyoti ji,
ji, could you become my candidate for 2 minutes, please, ma'am? Sorry, but yes? Yes, sure. Yes. Just saving time. Just saving time. So, Yes, now, sure. for Jyoti ji, mentally, each one of you can put yourself there. Okay? I'm the interview panelist for whichever is your dream school. Okay. Right? Right, ma'am. आप जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं अंदर से जी जान से, फर्स्ट इंस्टीट्यूट चॉइस, वो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसका इंटरव्यू हो रहा है, उसके लिए आपने सीवी भेजिए. Sure, ma'am. अब मेरा घिसा पेटा सवाल मेरे कैंडिडेट से क्या होगा किसी भी कॉलेज में, किसी भी प्रोफाइल के लिए, किसी भी स्कूल में? यार टेल मी अबाउट योरसेल्फ. जब ये मैं 2 रुपए की पेंसिल खरीदने गई पटरी बाजार में, मैंने क्या पूछा? इसके बारे में नहीं पूछा यार, इसके बारे में नहीं पूछा, इसके बारे में पूछा. तो ज्योति जी, माय कैंडिडेट, मैम सच्चाई नहीं चाहिए, बच्चों के परसेप्शन से जवाब 1-2 लाइन का प्लीज. Sure, ma'am. Sure. मैम, Jyoti ji, tell me about yourself. Yes, good morning, ma'am. Thank you People so much. listen very carefully. People listen very carefully. Ji, ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving me an opportunity to introduce myself. My name is Dr. Jyoti Tiwari. I have done my master's in political science and MAd in education. Apart from it, I did my NET, SET and PhD in education. And I have 8 years plus working experience. I am a team person and hardworking. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, candidate. Now, pay attention. Students, pay attention. When Jyoti ji, in other words, my candidate, in other words, you, each one of you, you here, were talking to me about yourself. This is a golden question, a must question for every interview. Even today, if I ask, if I go for a new assignment, if Jyoti ji has to hire me, she says, hey, बताओ ना अपने बारे में. जब ज्योति जी बोल रही थी, मैंने ये 4 पॉइंट्स नोट करे स्क्रिबल में. मैडम इज अ टीम प्लेयर. Let me say she's got pol science as her subject. I'm relating it with your profile, student, right? We didn't talk about it, but madam tells me that one of your hobbies, my students' hobbies, was cooking, or let me say music, or let me choose. ज़्यादा कौन सी हॉबी है बच्चों की मेरे? मैम क्या ज़्यादा हॉबी होगी बच्चों के अपने? गार्डनिंग, डांसिंग, कुकिंग. गार्डनिंग, डांसिंग, ठीक है. अब जब आप कैंडिडेट अपने बारे में मुझे बता रहे थे, आपने बहुत चीजें बताई, पर एज एन एग्जामिनर, एज एन इंटरव्यू पैनलिस्ट, उन बहुत से मैंने कोई भी 2, 3, 4 चीजें अब्सॉर्ब करी, ज्यादा शायद और भी अब्सॉर्ब करी, पर ये मैंने ली. So question 1 was, tell me about yourself. Answer 1 was in front of you. Please change the answer to suit yourself. You. I'm talking to you, beta, not to Jyoti ji. Jyoti ji is just helping me with my work to save time. Now, when you say your subject is, ma'am, इनका subject होगा ना कहीं कहीं बच्चों का political science? Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. या कोई और subject लूं जो ज़्यादा common है? Ma'am, science, integrated science and social science. Okay, okay. I understood that your subject is science. I understood that you work very well in teams. I also absorbed the fact, nobody said this, that you come from Delhi. You spend a lot of time in Delhi. I also absorbed the fact that you are interested in gardening. No, we've checked gardening. In music. Now pay attention. This much I have got in my notes, written or absorbed here. That's fine. Generally, it will be absorbed here. I'm scribbling them down to show it to you. Now, my question 2 will come from answer 1. Okay, Jyoti ji, if your subject is science, can you tell me what area of science interests you most, madam? Any area, ma'am, which is common to the students. Ma'am, biology. Biology. Ma'am, in biology, what is your favorite topic? Ma'am, photosynthesis.
Thank you so much. This, by the way, was on my mind also, that I'll take this example. I don't know how. Now, friends, listen. Teachers, student teachers, listen. मैंने इंटरव्यू पैनलिस्ट, बड़ा खड़ूस टाइप का, आपका ड्रीम कॉलेज है तो यार थोड़ा तो मुश्किल होगा ना. हाँ, कितना भी खड़ूस टीचर हो, इंटरव्यू पैनलिस्ट हमेशा ही खड़ूस होते हैं. कोई बात नहीं. क्वेश्चन 1 बेटा सिर्फ शुरू करा. आंसर 1 टोटली आपने मुझे दिया. आपने मुझे बताया कि साइंस आपका सब्जेक्ट है. मैंने तो इतना भी कर दिया क्वेश्चन 2 में कि फेवरेट एरिया उस सब्जेक्ट में कहां है. अब क्वेश्चन 2, ज्योति जी, if you have to take a class of photosynthesis of children who are in class 7, how will you go about it? Yes, ma'am. Ma'am, I will demonstrate with an a practical experiment. I will take a plant and Thank you, cover ma'am. it. Yes. Thank you, ma'am. The way, the tone, the start of the answer, students, you are the panel with me. Doesn't it convince you that Jyoti ji knows about what she's doing? पूरी कहानी हमने नहीं सुनी. क्यों Yes, अंकिता? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये फोटोसिंथेसिस का बोलबाला कहां से आ गया यार? ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये क्वेश्चन रश्मि ने नहीं सोचा. ये क्वेश्चन मेरे कैंडिडेट ज्योति ने मेरे को दिया. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन 1 मैंने शुरू करा. आंसर 1 जब मेरे क्लाइंट कैंडिडेट ने दिया, आंसर 1 will create question 2. Now delete what I have done in the past 2 minutes. The next question I come to is, supposing I didn't ask about your favorite biology, etc. Question 2 could have also been, tell me about Delhi since you spent a lot of time here. Question 2 could have also been, hey, listen, dancing is your hobby. What sort of dance are you doing? And can you tell me, you say Bharatnatyam, can you tell me the history of Bharatnatyam? You say Kathak. Listen, Kathak, a very good guru, a very high level of guru, something happened about that guru in the news 10 days back. What was it? Recently passed away. Thank you. Thank you. Thank you. Question 2 will emerge from any underline bold, any aspect of answer 1. So, ma'am, sorry, ma'am, I'm interrupting. One more sure. Thing I want to add here, ma'am. Like once they mentioned their hobbies, so the recruiter will definitely ask, because they have applied for teaching profession, not for that particular dancing profession. So they must ask you that how you will use this hobby in your teaching profession. So the answer they should know that how they will relate this hobby with their teaching profession, because they are applying for teaching. So whatever you are writing in your hobby, you must know that how you will take this in your teaching profession, how it will help you in your teaching. So that answer you should know. Ma'am, very, very valuable input. There has to be a connect. Yes. In whatever you are doing. In whatever you are doing. It be gardening, it be cooking, it could be bird watching, whatever you are doing, relate it to whatever be the job, in our case, teaching. Whatever you have done earlier, supposing randomly, you've done an engineering course, you've done an Excel course, computers, you've done a gardening course, a virtual gardening course, whatever you have done. I say, yaar, you're teaching me, aap kya karoge? It is not a waste. One, you have done it, so there is no undo button. Learn how you can relate it to your present job, your present subjects that you're going to be teaching. हर चीज का रिश्ता है. हम सिर्फ इनको अलग अलग चीजों में, ब्लॉक्स में इसलिए बांट देते हैं ताकि लर्निंग आसान हो. हमें स्कूल में होलिस्टिक लर्निंग चाहिए, ग्लोबल परसेप्शन चाहिए. मेरा छोटा सा बच्चा 8-10 साल का एक ग्लोबल सिटीजन बने, ये चाह है. So beautiful input, ma'am. Sure, beautiful. Thank you so much, ma'am. I will only change
from one block of the CV to the second block. Otherwise, this question answer continues with my candidate leading me. But when I want to change from your personal attributes, then I come to, okay, your 10th class marks and your teaching subject, and why do you choose science as your teaching subject? Now don't say कि ये मेरे marks इसमें अच्छे हैं. बेटा marks कम भी है ना तो चलेगा, passion होना चाहिए. Marks आ जाएंगे. क्लास में बच्चा सीख लेगा, सिर्फ पैशन क्रिएट कर दीजिए, खुद ब खुद सीख लेगा. उसमें मजा क्रिएट कर दीजिए. So this is what is the technique of leading the interview or acing the interview. You really have to know your CV. Now, once you make your CV, don't think it's the end of the work. No, it's the beginning of the work. You understand now, when your teaching subjects are known to you, sit down quietly, take a ream of paper, take 10, 12 A4 sheets, खुला paper, and scribble, यार इस area पे क्या 3 सवाल चमकते हैं? पहले सवाल में क्या जवाब दूं? तो ये जवाब दिया तो उसके आगे क्या 3 सवाल चमके? Infinitely, hours and hours and hours. And I have seen my own daughter doing it. I have belief in this system. I've seen my students do it. And children, आपने 20 साल मेहनत करी है इस 20 मिनट के लिए तो PI पर्सनल इंटरव्यू के लिए तो, जो कि CV पे बेस्ड है. आपको समझ में आई एम श्योर क्लियरली आ गया होगा कि आप इसमें कितना लीड कर सकते हैं. मैं हवा में से क्वेश्चन नहीं लाती बेटा. मेरी आज सारा का सारा सेशन आपके फ्लो में जा रहा है. मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है जो मुझे आपके ऊपर थोपनी है. आपके फ्लो में चल रही हूं. आपके सवाल से ही तो अगला सवाल उठ रहा है. सो बी सेंसिबल अबाउट द सीक्वेंसिंग. I will only change the block. The blocks are just 4 or 5 major blocks. If you have WorkX, sure, expect a question. You are a fresher. Your latest educational, what has been your learning? How is virtual online platform different or better? Please don't say some negative. Online is the future. It is the way to stay. It is. Look at the positives of every situation. Not to say that the Gurukul system was not okay. Not to say the physical classes were not okay, but everything has a positive and a negative. जो सवाल पूछा जाए, the undercurrent I want from the individual is positivity. You are shaping the attitude of my students. Attitude will define their altitude tomorrow, the height of success. Create fun in the class. Create interest in the topic. अरे ये फोटोसिंथेसिस क्या यार, इससे तो प्लांट पैदा होता है, प्लांट से लाइफ पैदा होती है, प्लांट की वजह से हम है, हमारा प्लैनेट है. नो अच्छा, फोटोसिंथेसिस ओपन टू पेज 62. ओ लला. एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, उसके बाद ऑल FAQs, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबडी. किस्सा ये है, शुभम मेरे पड़ोस में रहते हैं बचपन से. ध्यान से सुनिए. शुभम को क्रिकेट खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना शुभम. और विनीत भी दूसरे साइड मेरे पड़ोस में रहती हैं. विनीत को यार क्रिकेट बहुत मस्त है, ठीक है. तो विनीत जी को बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना. ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त एग्जाम्पल है. शुभम को बिल्कुल अच्छा नहीं होता. अब इनकी क्लास टीचर पुष्पा ने क्या किया, शुभम को जिसको अच्छा नहीं लगता था उसको क्रिकेट की स्कूल टीम में डाल दिया. और विनीत तो चलो ठीक है, अभी नहीं खेली. सुनिए, विनीत कैसे खेलती थी जिसको अच्छा लगता था. सुबह संडे को सूरज निकला नहीं कि भाग गई पड़ोस के मैदान में. वही बाथरूम चप्पल पहने, सर्दी में स्वेटर भी नहीं पहना, बस भाग गई. विनीत की मामा मेरे पड़ोस में थी, याद है.
Then at about 9 o'clock or 10 o'clock, me and Vinit's mama would call her, अरे भाई आजा थोड़ा ये ब्रेकफास्ट खा ले यार, कुछ ऐसे नंगे पैर घूम रही है, वो पैर जूते पहन के जा. अरे आ रही हूँ माँ, आ रही हूँ मौसी, आती हूँ, ठीक है. And another game and another game and another game. न भूख न प्यास न कंकड़ चुभे न धूप लगी, whatever. One situation. Second situation. शुभम सिर्फ एग्जाम्पल है प्लीज, मेरे पड़ोसी, क्रिकेट का सी भी नहीं चाहिए, पर अब पुष्पा टीचर ने डाल दिया, तो मैं और शुभम की माँ गए पिछले हफ्ते, जिस दिन जाना था संडे को प्रैक्टिस के लिए, उसके पिछले हफ्ते गए, या नए जूते लेके आए एडिडास के. शुभम की मम्मी ने इसको बड़ा अच्छे से तैयार किया, हेल्प किया, वट एवर बी द क्लास ऑफ द चाइल्ड. हमने मिल मिला के इसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया, आलू पराठा दही मक्खन के साथ. मेरे पास एक छोटी सी सेंट्रो गाड़ी है, मैं इसकी मम्मा इसको लेके गए छोटी सी गाड़ी में, नजदीक ही था वो, बिनी तो भाग गई थी वहां प्लेग्राउंड में, इसको गाड़ी में छोड़ छाड़ के आए. ओके, बड़े एहसान से शुभम उतरे. He took out his equipment or whatever was required, played for 2 minutes, and after 5 minutes he comes back pulling his hair. है मुझे नहीं खेलना, बकवास गेम है, क्या नॉनसेंस है, चलो वापस चल, let's go home, I don't want to play. Can you see a little difference in the two situations? Yes, who's going to answer? Can you see a difference here? Yes, ma'am. The Ma'am, interest interest of and both passion. Yes. the passion Sir? for that, ma'am. Anybody, one person speak up? Anyone? Ma'am, the passion of the Yes, ma'am. individual for the game. एक में पैशन है तो कहीं कोई स्पीड ब्रेकर ही नहीं है. गेम के बाद गेम के बाद गेम के बाद गेम. एक में इंटरेस्ट नहीं है तो मजबूरी है, बहुत मुश्किल है. Friends, I shared this because you as a teacher have to make the scenario fun, have to make it so that learning automatically happens. मुझे पता है, मैं अभी किसका नाम रैंडमली उठाऊं यहाँ से, पुष्पा ही थी जो बैक टू बैक मूवीज कल देख रही थी, बैक टू बैक. क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है. कहीं नींद नहीं आई पुष्पा को, रात के 2 बजे इसने मुझे फोन भी किया, गुड़िया ने. Interest is the key thing. Create that, the rest will happen. ड्रीम वो है, कहीं अच्छी डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, जो आपको सोने ही न दे. ड्रीम वो नहीं है जो आप सपने में देखें, सोते वक्त देखें. ड्रीम तो वो है जो आपको सोने ही न दे. And believe me, I share this passion for education. I've shared it 35-37 years of my life. अगर मैं और चीजों से दुनियादारी से थकी हूं, मुझे यार एक सेशन दे दो. It is a wow thing. कोई भी ऑडियंस हो, कुछ भी हो, you have to create love for your work and make it fun for yourself first, because that will get transmitted. अगर आप ही परेशान है ये कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, और ऐसे कब परेशान होंगे जब तैयारी नहीं होगी. नॉलेज और फिर उसके बाद डिलीवरी, कंटेंट एंड डिलीवरी ऑफ दैट. Yeah? Okay, so your time now. आज हमने किया क्या? Always have a recap. In a class, first thing, introduce what you're going to do. Introduction, tell them what you will do. Body, do whatever you told. Conclusion, tell what you told. So now we come to the conclusion part of it, seeing the time. What is it that we did today? Yeah. आज क्या किया? Ma'am, we get to know about the eminent role played by our CV, and it is the thing which attracts the interviewer, and interviewer asks the question relating to that. So we must be concerned whatever we are writing, that is true, and we should have the information regarding that CV, whatever we are writing. And as we are the one who are going to sell ourselves, so we have to bring out the positive thing in us, and we don't have to talk about the negatives. And if we are taking the negatives, we have to say the learning, that what learning I got
from my failures in my life, and I have to just mobilize the interviewer according to me. That's what. Very passionately spoken. When you speak with such conviction, conviction मतलब self belief, अगर ये इंटरव्यू में यार इस तरीके से आप बात करें ना, तो पूरा सुनने की जरूरत ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल ज्योति मैम ने कोई क्वेश्चन को आंसर करने को शुरू किया, हमको आंसर भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता चल गया उस कन्विक्शन से, उस टोन से, उस अंदाज से कि यार मस्त है. Very well said, Sukanya. Very well summed up. Yes, let's have more people. Tell me, how was the session? What did you learn from it? Yes, Sukanya, you raised your hand. Ma'am, answer was given by Pushpa Kumari that time. Oh, okay. Lovely, Pushpa. Great answer. Thank you. So I think Sukanya's hand was raised. So yeah, Yes, mistake. ma'am. Yes, ma'am. Sure, Pushpa. Yes, ma'am. Beautiful. Very well said. Sukanya, yes, your hand. Anybody else? Ma'am. Please be quick. Ma'am, first of all, you apprised us regarding the importance of CV. And unless and until we understand the importance of CV, we wouldn't actually pay serious attention towards it. So we understood the importance of CV. Then we got into how we should prepare a CV, and then we also got to know that one should be honest enough. Whatever is there in your CV should be honest, and it should come out very honestly. We shouldn't bluff, and it should be professional. And then we understood how, and you gave us pretty examples relating to, so that we can relate it with our own experiences and life. So we learned this, ma'am. Thank you so much. Just an analogy. If you are convinced that the CV is an important document, in other words, the most important document in life for an individual, for a candidate, exactly in the same way, every topic in every class is important. या कुछ इक्का दुक्का उसका बेस बना लीजिए और फिर उसको शुरुआत करिए, बहुत मस्त होगा. Yes, go ahead. Anita's hand was up. Anybody, please. We have a little time. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, the personally I understood by all the things you have said to us about the CV and the preparation of the CV. I've received that many of the things that we need to understand whenever we are going to make that particular data or all the things we have done in our past experiences. We must understood about every point we are mentioning on the CV, that the question may arise from that particular area that we are mentioning there. So we have to mention all the positive points over there. We don't need to like highlight all those points which can give a negative impact towards our interview. We need to understand that if we are giving an interview, we must be confident, and we must relate all those things which we are mentioning to the particular field of education. So that's it. Sure, wonderful share. Thank you, ma'am. Yes. Anybody can, ma'am, you can moderate who Yes, speaks ma'am. next. Ritu, There are lots of hands up. Yeah. Ritu, beta, you can unmute. Yes, ma'am. After that, Shubham. Good morning, Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, basically, I just want to ask one question actually. Like, suppose I have prepared myself for interview, and I am very much confident that I'll be able to do. I have written down everything, how to do, how to talk, how to speak, and how to answer the questions put up by the interview panel. But sometimes it happens, a question which comes up like unknowingly we get we get stuck somewhere, and like whatever we give answer, so it has a kind of it puts a negative impression on that. So and if we realize that oh shayad maine ye galat bol diya, so how to overcome over in that situation so that it cannot lead to like a negative result or something like that. एक या दो क्वेश्चन से डिसीजन नहीं होता है. अगर गलत बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन बीइंग है. अगर कुछ नहीं भी आता है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है. आप मुझसे अगर कोई सवाल पूछे और मुझे नहीं आता है तो कोई परेशानी नहीं है उसमें. इट्स पॉसिबल.
मैं क्या बोलूंगी, सुनो, दिस इज माय नंबर और ज्योति जी हैज माय नंबर. यार मैं भी रिसर्च करती हूँ और आप भी रिसर्च करो, अगली क्लास में इसको शेयर करेंगे. So don't get upset if you don't know something or if you've made a mistake. Sorry, ma'am. Sorry, sir. It's okay. It's okay. It just makes you more human. But then this can't be too much. If it is your job to be prepared for that session, if it is your job to be prepared with a CV, well then it should be. फिर भी इक्का दुक्का हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप उस वक्त स्कैर्ड हो गए तो जो बाकी टाइम है ना वो गड़बड़ा जाएगा. और ये क्लास में भी अक्सर शुरू में तो बहुत होगा, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जैक्टली दिस व्हाट हैपेंस कि एक चीज गलत होती है तो फिर उसकी वजह से उसको कवर अप करने की कोशिश में मे बी हम और एक दो चीज गलत कवर अप ना करिए, उसको एक्नॉलेज कर लीजिए. कोई इतना बड़ा ईगो लेके नहीं आए हैं कि हमें सब कुछ आता है. कोई दिक्कत नहीं है. I'll be honest with you. I mean, I have learned so much from my grandson who's 8 years old. वो जूम पे जो फिल्टर्स और स्टूडियो इफेक्ट्स उसके साथ वो टोपी ओपी पहन के डांसिंग करते हैं, उससे सीखने को मिले. इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ता रहता है, उससे वो फैक्ट्स मिले जो मैंने सुने नहीं है. एग्जैक्टली यही सिचुएशन होगी बेटा आपके स्टूडेंट्स के साथ. नॉलेज इज नॉट डिफिकल्ट. The best technology is aiding the students. So you don't get uncomfortable if you don't know anything. पर जितना जानो वो बहुत सही जानो, और जितना ज्यादा जान सको वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाएगा. Yeah. Very true, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Yes, Shubham, beta, please continue. Yes, ma'am. Ma'am, won't have any questions because you have already covered whatever doubts I have in your session. Regarding the feedback, I would like to say that as you have mentioned in the start that you won't be using any PPT and you will be just doing the interaction. I think it was just a class which we would have in the offline mode, the interaction and all those things. So even without the PPT, it was very informative and like you have kept us all engaged. So thank you for that, ma'am. That's great, Shubham. And by the way, just go to Google search bar and write CV making tips only PPT. You will have thousands of the best of the PPTs. Yes, ma'am. On the Google bar, just put only PPT. Okay. And any other aspect you want formats, put sample formats. Put sample questions on marketing format, on teaching format. The CV will open, the questions will open. Only remember to put only PPT, so then your search becomes, the no Word doc will come. Yeah. Ankita, you want to add something? I hope you have raised your hand. Ma'am, thank you, ma'am. So, ma'am, what I've, basically learned from all this, that we should know who we are. First, I think this is the most important thing, because in all these things we just forget the who we are. So, in spite of copying anyone's, resume, it's better to write who actually we are. And apart from that, like, interviewer is not interested in that how much we know, how much marks we get, but they are very interested in are we they are the passionate about it or not, or whether they are nobody knows everything, but are they able to learn or not. And apart from that, ma'am, I've just I in my free spare time I used to watch the IS interviews and all. In that they have shared that there is no shame in saying no. When you don't know the answer, be bold enough to say yes, I don't know, but after going home I will make sure to learn about it. So this is the best thing we should know. So this is all about, ma'am. I have basically Beautiful approach. And please don't bluff your answer, because you never know, the next question can be formed on the answer you give, and then you're in a soup. You know enough. Be composed, be calm, and learning is a continuous process. Yeah. So thank you very much. It's been a great session for me personally. I hope there's been some value add for each one of you. एक छोटी सी गुजारिश, आज सोने से पहले एक सेशन लेना, वर्चुअल सेशन, किसी को भी सामने बैठा लेना, सीवी सेशन ले लेना कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है. Just repeat the highlights of the session to yourself as if you are teaching this session to somebody else. You will be able to understand, yes, it is important an area for you, because this will start the selection process. And the higher you go, the more you can stretch to go higher. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for
telling the minute details of CV making. And you have very rightly mentioned that it is the most important document which you prepare for your professional journey. And I hope this will help my students to prepare their CV. And ma'am, I like the way, your interactive way, and you take yourself in the same level of the students and ask their questions and give the suitable examples to them. So your way of taking session is very impressive, ma'am. Thank you so much. And on behalf of Training and Placement Cell, ma'am, I am very grateful to you for your valuable time, ma'am. Thank you so much. Thank you, Jyoti ji. And you are an amazing candidate. You helped me with the session a lot. Thank you so Thank much. you so much. Thank you, students. God bless. Have a happy day and a happy life. Namaskar. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, students, hope you have marked your attendance. The attendance link is there in the chat box. Yes. And ma'am, Yes, few more students actually have raised their hands. I will share. I hope Shubha ma'am is there. Or Ma'am has left. okay, okay, okay. No problem. Whatever questions you have, just write me in my WhatsApp chat. I will share with the ma'am, and whatever answer is ma'am will share, I will let you know. Sorry, Mahendra, you have also raised your hand, but beta, that time ma'am was in flow, so I have not given you the opportunity. So whatever you want to ask, Ma'am, if, it's okay, ma'am. That doubt is clear because ma'am all mentioned it later. okay, okay. Thank you so much, Vidya. And if still it is there, please write me your question in my personal chat. I will share it with ma'am. Okay, thank Okay, you ma'am. so Thank much. you. And please mark your attendance. And tomorrow, I think the session is related with the communication.